Welcome back to this session. Today in this session, we'll be solving numerical based on the concept of temperature, stresses and strain. So now let us first understand what temperature, stresses and strain means in a material. So whenever any body is allowed to heat and then cool, when it is heated, the body will expand, and when it is cooled, the body will contract. इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई भी बॉडी को हीट करते हैं तो जब हीट होते हैं बॉडी तो एक्सपैंड हो जाते हैं यानी कि बड़ा हो जाते हैं, और जब उनको हम कूल करने देते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं और वो छोटा हो जाते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो जब बॉडी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होते हैं, these are free, they freely contract and they freely expand. And in the process, when this contraction and expansion is happening in the body, there will be no stresses and strain formed in the body. जब भी any body is allowed to expand and contract, वो process पे कोई भी body पे stress या strain generate नहीं होते हैं. Stress and strain generate होते हैं जबकि हम बॉडी को हीट करते समय पे अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो उस पे हमने जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके वजह से stresses will be generated as well as strain will be generated. So these stresses and strains developed in the body due to temperature are known as temperature stresses and temperature strains, and these are also known as free deformation. Now we know that strain E is change in length by original length here. So this our strain E here is change in length by original length, right? The change in length is signified by del L here, and the original length is L. Now this del L here is also known as free deformation. Del L here is also known as free deformation, and this free deformation is further equal to alpha T and L. Okay, alpha T and L. And when we replace, जब हम del L को alpha T L से replace करते हैं, then we can cancel L into L, right? So what remains? E equals to alpha T. तो हमें यहाँ से strain, temperature strain मिल जाते हैं. So temperature strain comes equal to E equals to alpha T. This value of alpha will always be given to you in the question. Don't worry about that. Now, we know that Young's modulus E or modulus of elasticity E is equal to stress by strain. Using this relationship, we get compressive stress equals to E, which is Young's modulus, into compressive strain. So, here compressive stress is sigma will be equal to E into alpha T. Now this alpha T is our compressive strain. This compressive strain is taken from this value here, E, right, which is equal to alpha T. So further we will have temperature stress equals to alpha T E. So remember this formula, we'll be using it for the numerical, to solve the numerical. So let us first come to the first numerical. So this is your first numerical here. A steel bar 10 meter long is at a temperature of 23 degrees Celsius. Find the expansion of the bar when its temperature is raised to 70 degrees Celsius.
If the expansion is completely prevented, find the magnitude, the nature of stress developed in the steel bar. Young's modulus given is 200 kilonewton per mm square, and alpha, value of alpha is given equal to 12 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. Okay, now यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर एक स्टील बार दिया है और स्टील बार का लेंथ दिया है, it is equal to, the length of the steel bar here is equal to 10 meter. If we convert this meter to mm, we have to multiply it with 6. If we convert this 10 meter to mm, then we have to multiply it with 10 raised to power 3 here. And again, the temperature is given. So this steel bar initially, ये steel bar का उसका temperature 23 degree Celsius है. So we will let this first temperature be equal to T1. And फिर बताया है कि find the expansion of the bar when its temperature is raised to 70 degree Celsius. तो अभी वहाँ पर एक steel bar है, उसका length 10 मीटर है और उसका इनिशियल टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस दिया है, और उसके बाद ये स्टील बार को हीट किया गया है. आफ्टर हीटिंग द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग टू 70 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द एक्सपेंशन कि कितना एक्सपैंड हुआ है. जब हम कोई भी मटेरियल को हम हीट करते हैं तो द बॉडी विल एक्सपैंड, राइट. तो अभी यहाँ पर हमने हीट किया है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो उसको हमें एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए पूछा है. तो नाउ फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज गिवन and it is equal to 200 kilonewton per mm square. Now further converting this kilonewton to Newton, we have to multiply it with 10 raised to power 3 again, right? So we get Newton per mm square and the value of alpha is given here. Now हमें फ्री डिफॉर्मेशन फाइंड करना है. तो फ्री डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमें यहाँ ऊपर से हमें पता है कि हमने पहले से किया था. It is equal to L alpha T. It is equal to L alpha T, from which L is given in the question. L given in the question is equals to 10 into 10 raised to power 3, 10 into 10 raised to power 3 here, into alpha, the value of alpha is given in the question again, 12 into 10 raised to power minus 6, right, into now this temperature T here. जब हम ये टेम्परेचर T फाइंड करते हैं तो हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है टेम्परेचर का. तो वी हैव डिफरेंस ऑफ, सो T विल बी इक्वल टू T2 minus T1. Now finding the value of free deformation, let us solve it in the calculator. It will be 10 into 10 into 10 raised to power 3 into 12 into 10 raised to power minus 6 into bracket open 73 minus 70 minus 23. So this is equal to 5.56. So this is free deformation. ये क्यों हो रहा है ये free deformation? ये free deformation हो रहा है because of sudden expansion in the body. और expansion किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि ये स्टील बार जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, राइट, उसका इंक्रीज किया गया है टेम्परेचर, तो इसलिए उसका फ्री डिफॉर्मेशन आ रहा है 5.64 एंड उसका यूनिट विल बी mm. तो वी हैव 5.64 mm. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है? इफ द एक्सपेंशन इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, फाइंड द मैग्नीट्यूड.
the nature of stress developed in the steel bar. तो हमें अगर इससे ज्यादा एक्सपेंशन हमने फ्री डिफॉर्मेशन को स्टॉप किया गया है तो फिर आपको स्ट्रेस फाइंड करना है, राइट? तो स्ट्रेस इज इक्वल टू E alpha T, which we have already found, right? So E here is Young's modulus. Young's modulus is given equal to, कितना दिया है Young's modulus question पे? 200 kilonewton per mm square, right? तो यहाँ पर we have Young's modulus 200 into 10 raised to power 3 into alpha is given 12 into 10 raised to power minus 6, and temperature again will be the difference of the temperature in this steel bar, which will be equal to T2 minus T1. So now let us find this stress. This stress should come equal to this value. Let us do it in a calculator. 200 into 10 raised to power 3 into 12 into 10 raised to power minus 6 into 70 minus 23. So this is coming equal to 112.8, और ये इसका यूनिट क्या है स्ट्रेस का? न्यूटन पर mm स्क्वायर. So we are getting 112.8 Newton per mm square. So I hope this numerical is also clear. अब हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अब ये न्यूमेरिकल पे बताया गया है there is a steel rod और उसका diameter दिया है 30 mm, is 1 meter long and is heated through 100 degree Kelvin at the same time subjected to a pool P. If the total extension of the rod is 2 mm, what should be the magnitude of P? Take E equals to 200 GPa, alpha equals to 12 into 10 raised to power minus 6 degree Kelvin. Okay, now यहाँ पर क्या दिया है? गिवन पे डायमीटर, रॉड का डायमीटर दिया है, और ये यहाँ पर एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर 30 mm है और उसका लेंथ 1 मीटर दिया गया है, एंड ये स्टील रॉड को हीट किया गया है एंड उसका टेम्परेचर 100 डिग्री केल्विन दिया है, एंड जब ये हीट कर रहे हैं उसके साथ साथ ही उसको पूल भी कर रहे हैं. तो जब पूल कर रहा है हमें उसको, जब पूल हुआ है तो उसका वो लेंथ पे इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब वो एक्सटेंड हो जा रहे हैं. सो व्हेन इट इज एक्सटेंडिंग the rod has extended equal to 2 mm, right? Now हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब वैल्यू ऑफ पी. पुल हमने कितना दिया है, मतलब उस पे अगर उसका रॉड 2 mm एक्सटेंड हुआ है तो वहां पर पुल कितना दिया है, वो पुल हमें फाइंड करना पड़ेगा. और मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस इज गिवन एंड अल्फा इज गिवन हियर. सो फ्रॉम द गिवन dia is given, length is given, temperature is given at which it is heated, and the total extension is given, alpha and E is given, right? So अगर हमें मीटर से mm पे कन्वर्ट करना है तो it will be into 10 raised to power 3, right? Again here the value of E is given in GPa. So अगर हमें GPa से न्यूटन पर mm स्क्वायर पे कन्वर्ट करना है, so this will be equal to into 10 raised to power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Now the total expansion यहाँ पर total expansion कितना हुआ है? 2 mm हुआ है. So this total expansion is equal to free deformation. Free deformation कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब हम ये स्टील रॉड को हीट कर रहे हैं तो हीट की वजह से ये स्टील रॉड इलोंगेट हो रहा है, इट इज एक्सटेंडिंग और इट इज
increasing in its length, right? तो this total expansion मतलब ये कितना expand हुआ, मतलब कितना लंबा हुआ, is equal to free deformation plus extension due to pool P. फोर्स हमने जितना फोर्स लगाया उसकी वजह से कितना एक्सटेंड हुआ है, राइट? नाउ टोटल एक्सपेंशन कितना दिया है? दिस एक्सटेंशन is given equal to 2 mm, right? So we have 2 here, 2, and free deformation is equal to alpha L alpha T plus pool P, right? Now यहाँ से हमें whatever is given from the question उसका वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पर. तो हमारे पास है L का वैल्यू is given equal to 1 meter which is equal to 1000. So we have 1000 into alpha का वैल्यू दिया है 12 into 10 raised to power minus 6. So we have 12 into 10 raised to power minus 6 into T, टेम्परेचर. जितने टेम्परेचर पे हीट किया गया है वो 100 डिग्री केल्विन पे हीट किया गया है, तो उसका टेम्परेचर इज इनटू 100 हियर. प्लस ये एक्सटेंशन कितना एक्सटेंड हुआ है, लेंथ ऑफ द स्टील रॉड कितना एक्सटेंड हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पूल पी, वो हमें नहीं पता, तो हम इसको हम डेल एल रख देंगे. सो दिस इज आवर डेल एल, राइट? तो यहां से हम वी कैन फाइंड फर्स्ट, आपको ये वाला ये सॉल्व करना पड़ेगा पहले आपको. सो लेट अस सॉल्व दिस वन. It will be coming equal to 1000 into 12 into 10 raised to power minus 6 into into 100. So this will be equal to 1.2. तो यहाँ पर we have 1.2 here, right? 1.2 plus ये del L वैसे की वैसे आएंगे यहाँ पर plus del L. So अब हमें फाइंड करना है ये वैल्यू del L कितना आएंगे. तो यहाँ पर this 1, 2 and 2 these are numbers, whole numbers, right? तो ये these are numbers and they are like terms. तो हम इन दोनों को साथ पे रखेंगे तो क्या होगा, del L will be equal to 2 minus, जब हम ये 1.2 उधर लेके जाते हैं तो ये यहाँ पर अभी पॉजिटिव है उसका वैल्यू, so it will be changing into negative. So 2 minus 1.2. So we have यहाँ पर 2 minus 1.2 which is coming equal to 0.8 mm. So here the value of del L is equal to 0.88 mm. Now we have found the strain which is change in length by its original length. So we have found the free deformation, or we can also call this as a change in length, or it is a strain, right? So strain further is equal to PL by AE, जो हमने पहले सॉल्व किया है, right? PL by AE. So del L is equal to PL by AE. Now हमें यहाँ से पता है del L हमें मिल गया है which is equal to 0.8. P हमें नहीं पता, again we still don't know the pool P. लेंथ हमें पता है, एरिया पता है, क्योंकि ये स्टील रॉड का डायमीटर दिया है तो हम डायमीटर से एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो एरिया we can find it into Young's modulus E is given. So with this, how do you solve? So first solve this portion. Let us solve in a calculator. Right? What do I have? P, leave it as it is. Leave P as it is. So I have 1000 divided by, फिर इसको हम pi by 4 pi into
its diameter 30 square into Young's modulus E. Into Young's modulus E is 200 into 10 raised to power 3. So this will be coming equal to 7.0735 है. तो just round it off this value here. 35 को 4 बना लो. Then we have 7.074 into 10 raised to power minus 6 into 10 raised to power minus 6. And this P here will remain as it is. P will further be equal to 0.8 divided by 7.074 into 10 raised to power minus 6. So this is coming equal to 113.09 into 10 raised to power 3. So we have P, pool. Okay, the pool P here is coming equal to 113.09 into 10 raised to power 3 न्यूटन, और उसका यूनिट है न्यूटन. तो यहाँ से क्या पता चला कि जब हम ये स्टील रॉड को हिट करते हैं और उसको एट द सेम टाइम जब वो हिट हो रहा है उसको हम पुल पी से खींचते हैं तो वहां पर एक्सटेंड हो जाते हैं, वो ये स्टील रॉड एक्सटेंड हो जाते हैं और उसका एक्सटेंशन कितना होते हैं 2 mm होते हैं. और यहाँ पर पुल कितना है वो हमें नहीं पता था, तो ये एक्सटेंशन कितना हुआ था उसके हिसाब से हमने जब पुल फाइंड किया तो वो पुल आ रहा था 113.09 into 10 raised to power 3 न्यूटन. तो दिस इज योर पुल P. So now let us solve the third numerical. A steel rod 20 mm diameter is 1.2 meter long and is heated through 120 degree Celsius at the same time subjected to a pool P. Again, फिर भी यहाँ पर एक स्टील रॉड है, उसका डायमीटर 20 mm है और उसका लेंथ 1.2 मीटर लॉन्ग है और वो उसको हिट किया जा रहा है एट 120 डिग्री सेल्सियस. एंड जब उसको हिट कर रहा है तो उसको खींच भी रहा है, राइट. इट इज गेटिंग पुल्ड विथ पुल P, राइट. अब जब उसको खींच रहा है एट द सेम टाइम व्हेन इट इज बीइंग हीटेड तो उसका that steel rod is getting extended and the extension is coming equal to 3 mm. Now what should be the magnitude of P? Again हमें यहाँ पर पुल P कितना दे रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा. तो फिर यहाँ पर गिवन ये सब है, हमारा डाया गिवन है, स्टील रॉड का डाया दिया है, तो ये डाया से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, राइट. π/4d². एंड ये स्टील रॉड का लेंथ दिया है विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर लॉन्ग. टेम्परेचर उसको हिट किया जा रहा है एट 120 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस दिया है और उस पर जब खींच रहा है तो उसका टोटल एक्सटेंशन इज कमिंग इक्वल टू 3 mm. एंड value of alpha is also given and the value of Young's modulus is also given, which is 200 GPa. And if we convert it into megapascal is also equivalent to Newton per mm square. So it is 200 into 10 raised to power 3 megapascal. Okay. Now again here we know that total extension of this diameter of this steel rod will be equal to free deformation plus extension due to P. And this total extension कितना दिया है? Total extension 3 mm दिया है यहाँ पर, right? So total extension is equal to 3 mm here, equal to free deformation is L alpha T plus P. अब L कितना दिया है? 1.2 मीटर दिया है. तो अब मीटर से mm को कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 3 करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट. सो वी हैव 1.2 इंटू 10 raised to power 3 इंटू अल्फा का वैल्यू 12 इंटू 10 raised to power minus 6 दिया है. सो 12 इंटू 10 raised to power minus 6.
एंड टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर इट इज बीइंग हीटेड एट 120 डिग्री सेल्सियस, सो उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस प्लस एक्सटेंशन ड्यू टू पूल विच इज प्लस पी, राइट। तो हम ये सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे, तो वी विल गेट 1.2 into 10 raised to power 3 into 12 into 10 raised to power minus 6 into 120. तो ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग इक्वल टू 1.728. तो यहाँ पर we have the value 1.728 plus P. So उसका पूल P प्लस. तो अब हम जब लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स दोनों को साथ पे लगाते हैं तो ये नंबर हम उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड पे. तो अभी क्या है, अभी ये नंबर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1.728. तो हमारा पूल P यहां से कितना आ रहा है, पूल. So 3 minus 1.728 will be coming equal to 1.272. Now this here is not P here, this is del L. This is extension due to P, right? So this extension due to P is coming equal to 1.727 mm. Now अगर हमें if you want to find the pool P, del L, which is change in length, will be equal to PL by AE, right? तो हमें del L यहाँ से मिला है, del L was equal to 1.727 here is equal to P. हमें नहीं पता, हमें ये P फाइंड करना पड़ेगा. So L length of the steel rod was given equal to 1.2 meter. So मीटर को mm पे कन्वर्ट करने के लिए 1.2 into 10 raised to power 3 किया है, राइट. P हमें फाइंड करना है तो P को हम P छोड़ देंगे. और एरिया फाइंड करने के लिए डायमीटर दिया था, राइट. सो टू फाइंड एरिया ऑफ अ स्टील रॉड द फॉर्मूला इज पाई बाय 4 d square. सो पाई बाय 4 d square. डायमीटर गिवन वाज 20. सो यहाँ पर 20 square into E was given again. E was given equal to 200 GPa, which is equal to 200 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. तो हम जब इसको further solve करते हैं again कैलकुलेटर पे लगा के, P को P छोड़ देंगे अभी हम. 1.2 into 10 raised to power 3 10 raised to power 3 divided by pi by 4 into 20 square. 20 square into 200 into 10 raised to power 3. So ये आएंगे, ये आ रहा है 1.909 into 10 raised to power minus 5. तो हमारा we have 1.909 into 10 raised to power minus 5. और जो ये P है, P वैसे के वैसे ही रहेंगे. सो into P here. ओके. नाउ अगर हमें ये P फाइंड करना है तो P क्या होगा, P will be equal to 1.272 divided by 1.909 into 10 raised to power minus 5. तो जो हमने पिछले पे आंसर पे फाइंड किया है तो डिवाइडेड बाय ये किया तो इट इज कमिंग इक्वल टू 66.6 into 10 raised to power 3. तो पुल कितना देना पड़ रहा है, वहां पर ये बार कितना एक्सटेंड हुआ है, उसका टोटल एक्सटेंशन 3 mm हुआ था, राइट. तो ये 3 mm एक्सटेंड होने के लिए पुल जो देना पड़ रहा है, दैट पुल इज इक्वल टू 66.6 into 10 raised to power 3 Newton. So let us solve the last numerical. Now ये last numerical पे
A steel bar of 30 mm diameter is heated to 80 degrees Celsius and clamped at the end. It is then allowed to cool down to 30 degrees Celsius. During cooling only 1 mm contraction was allowed. Calculate temperature, stress developed and reaction at clamp length of bar 10 meter. E equals to 200 Newton per mm square. Alpha equals to 12 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. Now again यहाँ पर क्या दिया गया है? Dia is given. Dia is equal to 30 mm and temperature is given. T1 is given. जब that is the initial temperature T1. जब वो हिट हो रहा था उस टाइम पे उसका टेम्परेचर ऑफ द बार वाज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस और उसको सडनली उसको कूल होने दे रहा है. हिट करने के बाद उसको कूल होने दे रहा है और कितने तक कूल होने दे रहा है? 30 डिग्री तक. तो T2 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस. एंड जब वो कूल कर रहा था तो वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था. मतलब there is a contraction in the material and that contraction was equal to 1 mm. So that contraction is equal to 1 mm and the length of the bar given is 10 meter long. Alpha and value of alpha and E is given. Now यहाँ से हमें क्या find करने के लिए बोला है? Temperature stress develop. जो temperature stress develop हुआ है जब हम इसको कूल डाउन कर रहा है और 1 मीटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप कितना है हमें वो फाइंड करना है. तो हमें पता है टेम्परेचर स्ट्रेन E इज इक्वल टू फ्री डिफॉर्मेशन बाय L और हमें पता है कि फ्री डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू L अल्फा T माइनस. नाउ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है राइट. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन को हम हमेशा माइनस पे ले जाते हैं. ये फ्री डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला L अल्फा T हो रहा है राइट. और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है अगेन ये फ्री डिफॉर्मेशन में. तो हम इसको माइनस करेंगे, फ्री डिफॉर्मेशन से माइनस करेंगे. अगर इस पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं, इस पे अगर एक्सपेंशन हो रहा था तो ये माइनस करने की बजाय हम यहाँ पर प्लस करेंगे. ओके तो फिर यहाँ पर अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो माइनस इट्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे. सो डिवाइडेड बाय L. तो हमें अभी यहाँ पर E कितना है वो नहीं पता है राइट. सो वी हैव वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 10 मीटर. L का लेंथ दिया है ना बार का तो वो दिया है 10 मीटर हियर. तो L इज इक्वल टू 10 इंटू, अब ये मीटर को हमें mm पे कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 10 इंटू 10 raised to power 3 mm पे कन्वर्ट हुआ इंटू वैल्यू ऑफ अल्फा वाज गिवन राइट. अल्फा वैल्यू वाज गिवन 12 into 10 raised to power minus 6. So we have 12 into 10 raised to power minus 6 into now the difference in temperature. So difference in temperature फाइंड करने के लिए जो भी आपको बड़ा टेम्परेचर है माइनस छोटा टेम्परेचर करेंगे तो आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू T1 minus T2 right. So we have T1 is equal to 80 degrees Celsius जब उसको हीट कर रहा था और जब उनको कूल होने दे रहा था उसका टेम्परेचर was 30 degrees Celsius माइनस और उसके कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा था 1 mm. तो we have -1 और divided by its length. तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर स्ट्रेन, we had to find temperature strain and we had to find temperature stress right. So अभी यहाँ पर temperature strain find करने के लिए this is the formula. Now temperature strain will be coming equal to, let us solve in the calculator here and see, cross verify if we are getting 5 into 10 raised to power minus 4 or not. So यहाँ पर we have 10 into 10 raised to power 3 into 12 into 10 raised to power minus 6 into 80 minus 30 minus contraction divided by its length again 10 into 10 raised to power 3.
So this is coming equal to 5 into 10 raised to power minus 4. तो उसका strain आ रहा है 5 into 10 raised to power minus 4. Now strain का अभी यहाँ पर यूनिट कुछ भी नहीं लिखा है. क्यों नहीं लिखा है यूनिट कुछ भी नहीं? Because strain is unitless. Strain का कोई भी यूनिट नहीं है, इसलिए the unit has not been mentioned for the strain in here, and the strain is coming equal to 5 into 10 raised to power minus 4. Now from this we have found strain, and we have यहाँ पर we have Young's modulus. So from here we can find stress. From this relation, Young's modulus is equal to stress by strain. Stress by strain. From this relation we can find stress, right? So from this relation, stress will be equal to Young's modulus E into strain. So Young's modulus E is given equal to 2 into 10 raised to power 5 into, we have found the strain, 5 into 10 raised to power minus 4. So let us multiply here, into 2 into 10 raised to power 5. So this is coming equal to 100 exactly. So stress जो develop हो रहा है ये steel rod पे, तो उसका stress आ रहा है 100 Newton per mm square, right? तो उसका stress आ रहा है 100 Newton per mm square. और यहाँ से if you want to find the pull P, right? Stress से हमें पता है from the relation stress is equal to force by area. Now from this equation, force will be equal to stress into area. So we have stress, we have 100 Newton per mm square into area. Area हम कैसे find करेंगे? Area find करने के लिए यहाँ पर diameter दिया है, तो हमारे यहाँ पर stress है, right? Stress 100 है, into area कितना है? Area will be pi by 4 into d square. d कितना दिया है? d दिया है 30. So 30 square करेंगे तो हमें we are getting the force P. So this force P is coming equal to 70.6 into 10 raised to power 3. So if you are keeping it as it is like this in here, so you will be getting 70,685.8. So this 0.8 here has been converted and made it into 6. Okay, so we have 70686 Newton. So I hope this numerical is clear.